Evening, everybody. I am Dr. Parul Soni, and I practice glaucoma and cataract in Gurgaon and Delhi NCR. And as we all know that world over, we are celebrating the World Glaucoma Week, which starts from March 7th till March 13th. I will be sharing some facts about glaucoma and why glaucoma is important for us to know and what all should we know about it. Now, as we all know that glaucoma is a disease which is also called a silent thief of sight, and you can presume that eye is like a ball, and basically the nerve conveys all your signals from the outside of the world to the brain, and so the optic nerve is a very important structure. And what happens in glaucoma? Glaucoma is an irreversible disease in which, because of high pressures, the optic nerve starts to get damaged, and thus you start losing your vision. And most important thing about glaucoma is that it is irreversible. So once the vision is lost, it is lost forever and you cannot regain this vision. Now, why are we talking about glaucoma? Because glaucoma is a global problem, and it is the second leading cause of blindness worldwide. And when we look at the Indian scenario also, it is the second leading cause of blindness after cataract. And we have to understand that it is irreversible and it cannot be cured once the damage has been done. So what happens? The eye looks something like this and it is filled with water. So water keeps circulating inside the eye. It keeps getting produced and then it getting drained. So you have an eye pressure which is usually below 20 millimeters of mercury. And what happens in glaucoma? The pressure increases and it starts to damage your optic nerve. And when we look at the nerves, so normally the eye nerves look something like this. And in glaucoma, the size of nerve, what we call cup in layman terms, the size of cup increases, and that is how the glaucoma develops and the nerve is being damaged. Now, why this happens? So one can presume that eye is basically like a wash basin in which the water is coming and it's getting drained. So if there is any kind of blockage in the draining tube, either it gets narrowed or it is blocked by some particulate matter, the water is not able to drain outside the eye, and that is why the water starts to get collected inside the eye and the eye pressures go up. So as I was telling you, what is a normal eye pressure? Normally the pressure should remain below 21 millimeters of mercury, but it varies throughout the day. So you can have some pressure around 14 in the morning hours, maybe 12 in the evening hours, and this is how the pressure keeps varying. And some patients have even low pressure and they still can develop the damage because of glaucoma. Now, why is glaucoma awareness important? As I was mentioning, that it is called a silent thief of sight. It has no symptoms in the early stages. So patients have absolutely no complaints and they come for a routine checkup, maybe for a glass change or maybe with some, watery eyes or some non-specific complaint. And when we look at the nerves or we look at the pressures, we tell patients that this you may have glaucoma and we are suspecting glaucoma in your case and you should go in for other tests. Now, one very common question which patients keep asked that, they keep telling us that my vision is absolutely normal, so can I have glaucoma? So this is very important for all the patients and everybody to understand that glaucoma is asymptomatic and one can have glaucoma despite having a very good visual acuity. And it can sometimes, present with vague symptoms like headache, maybe rapid change in the number, and very occasionally do patients of glaucoma present with red eye or a painful eye. And this happens especially if the pressures are very high. Now, when we are spreading the awareness of glaucoma, the most important thing that we should be able to convey to the normal population is that who all can have glaucoma. That means what are the risk factors which can lead to glaucoma. Now, very important to understand that patients who have a prior family history of glaucoma, they're at risk. Patients who have any kind of eye injury, who have been using steroids, who have high plus numbers and sometimes even myopes, or who have diabetes. Now, these are the risk factors which can lead to glaucoma, and these are the subset of patients who should definitely go and get an eye checkup. Family history is something which I would like to stress upon again. It is very important. So, if anybody is diagnosed as glaucoma in your family, it's always a good idea that please get your eyes checked and get your eye pressures checked. Now again a very common question, इंडिया में जैसे ग्लोकोमा को भी कॉल हिंदी में काला मोतिया कहते हैं एंड कैटरेक्ट को सफेद मोतिया कहते हैं.
So one very common question which patients ask us कि भाई काला मोतिया और सफेद मोतिया में क्या डिफरेंस है? तो काला मोतिया और सफेद मोतिया बहुत ही स्पेक्ट्रम के दो एंड्स हैं। सफेद मोतिया और कैटरैक्ट इज कम्प्लीटली क्योरेबल। जैसे हम इसकी सर्जरी करते हैं और कैटरैक्ट को हम निकाल देते हैं, वी इम्प्लांट अ लेंस, पेशेंट गेन्स वेरी गुड विजन। ऑन दी अदर हैंड जो काला मोतिया जिसको हम ग्लॉकोमा कहते हैं, वो आंखों के प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता है, एज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट क्योरेबल। तो एक बार ग्लॉकोमा हो गया, जैसे आपको डायबिटीज होती है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर होता है, same way, if you have glaucoma and you've been diagnosed as glaucoma, most probably you are going to have it for your entire lifetime, and आपको regular drops डालने पड़ेंगे, and regular you have to go in for the treatment and follow-ups with the doctor. Now again, a very common question which patients ask that can glaucoma and cataract, डॉक्टर साहब हमको दोनों चीजें हो सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। कैटरैक्ट एंड ग्लॉकोमा कैन को एग्जिस्ट, कैटरैक्ट एंड ग्लॉकोमा कैन बी ऑपरेटेड टुगेदर, उनको अलग अलग भी ऑपरेट कर सकते हैं। जिन पेशेंट में हम कैटरैक्ट कर रहे हैं उनमें कई बार ग्लॉकोमा होता है, जिनमें हम ग्लॉकोमा ट्रीट कर रहे हैं वो भी कैटरैक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो दीज टू थिंग्स विच आर कॉमन मिसनॉमर्स कैन डेफिनेटली को एग्जिस्ट। और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं which can lead to glaucoma. So whenever you are going in for an eye checkup, it is very important that please share the entire list of medication that you are taking. Now many a times we think that हम अपने eye specialist के पास जा रहे हैं, and why should we tell that we have diabetes, we have thyroid, we are taking steroids, but one has to remember that body पूरी एक ही है, तो eyes को भी can't separate away and we can't pull them out of the body. So if you are taking any medication, if you have any systemic disease, it is a possibility that वो आपकी आंखों को अफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज रिमेंबर दैट अपने डॉक्टर को, आप आई डॉक्टर को सारी मेडिसिन के बारे में डेफिनेटली बताएं कि भाई वो क्या ले रहे हो आप, और कैन इट कॉज ग्लॉकोमा। अब अगेन कैसे पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको ग्लॉकोमा है या वो रिस्क पे हैं? व्हेन वी चेक देयर आईज, वी चेक देयर नर्व्स, उनके हम ड्रेनिंग ट्यूब्स चेक करते हैं, आई वाज मेंशनिंग कि वो ब्लॉक हो जाती है। सो ऑन दीज पैरामीटर्स वी टेल कि भाई आपको ग्लॉकोमा का सस्पेशन लग रहा है एंड यू नीड फर्दर टेस्टिंग। एंड व्हाट ऑल टेस्टिंग वी डू, वी लुक एट द नर्व्स कि भाई साइज ऑफ नर्व क्या है, एनलार्ज तो नहीं हो गई है नर्व साइज। वी लुक एट द एंगल्स, वी लुक एट द प्रेशर्स। आई एम श्योर सारे पेशेंट्स जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनको पता होता है पफ ऑफ एयर फेंकी जाती है आंख के ऊपर, एंड दैट इज हाउ वी चेक प्रेशर्स, एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड वे ऑफ चेकिंग आई प्रेशर्स। वी डू सम फर्दर टेस्टिंग कि वो हम कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं। वी लुक एट द ड्रेनिंग ट्यूब्स की, वो पानी ड्रेन करने वाली ट्यूब ओपन है, ब्लॉक तो नहीं हो रही है, एंड दैट इज हाउ वी क्लासीफाई कि भाई किस तरीके का ग्लॉकोमा है, उसमें कैसा ट्रीटमेंट देना है। Then we also scan the optic nerves, which we do with the OCT, and there are other tests available. Now, the most important test which usually patients hate, patients ko bilkul pasand nahi hai test, it's a difficult test, which is the field test, in which we make you sit in a dark room and we ask you to do it's something like a computer game, video game, in which you have to keep pressing the buttons. Now, very important is that many times, as I was mentioning, that patients say that doctor साहब हमें तो बहुत clear दिखाई दे रहा है। So yes, glaucoma patients can see very clearly. Now, normally, ideally, you should be seeing something like this. But what happens as glaucoma advances, the visual field becomes constricted and it becomes something like a tunnel vision. And that is why even you can see very clearly in the center, but the peripheral field of vision gets damaged or lost. And your daily activities, if you're driving, you may bump into somebody, you may bump or fall down while you're walking. So these daily activities may become challenging if the glaucoma advances. Now again, important to understand, जैसे diabetes है, जैसे blood pressure है. Now these diseases, once you develop them, they are there through the entire lifetime. Same way glaucoma भी हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, but we can control it, we can keep it under check with regular follow-ups and regular treatment, but you have to take lifelong treatment. And kuch important cheezein which you have to, and as glaucoma specialists we keep telling all our patients कि भाई ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। Avoid drinking lot of water empty stomach, खाली पेट बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, because उससे suddenly eye pressures can shoot up in the morning hours जब आप अपने घर में बैठे हैं, you are not visiting any doctor, तो पता भी नहीं चलता, and by the time you come to the clinic the pressures have normalized. So you have to avoid these things.
Now, a good thing about Indian population is that we are moving towards a healthy lifestyle. Patients are, I mean, people have started doing yoga, exercises, gymming, and all. But one has to remember that if you are doing yogasanas and yoga, practicing yoga, avoid doing headstand, avoid karna hai. Exercise like Kapal Bharti needs to be avoided because these exercises can worsen glaucoma. Now, again, gymming is something which has become very popular, and you have to be very careful that in the of building the muscles very rapidly, you should not go in for steroids. And again, अगर आपको glaucoma का suspicion बताते हैं doctor, or if you are on, I mean, you have glaucoma, you have to avoid or minimize steroids which you are taking for any other cause. And again, important to make some lifestyle changes. Do exercise, do meditate, lot of greens, quit smoking, maintain a healthy weight, limit your caffeine intake. And again, when if you're driving and if you have glaucoma, you have to be very careful because if you have field loss, you have to be driving very, very carefully and avoid night driving. Now, coming to the treatment aspect, once you patient is diagnosed as glaucoma, तो क्या-क्या treatment options हमारे पास available होते हैं? We have eye drops, sometimes we do laser, and in case if the laser and the drops are not working and the glaucoma continues to progress, that is the time that we opt for surgery. Now the drops are prescribed based on the type of glaucoma that you have, कितना advanced है glaucoma, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉप्स कैसे डालनी है. नाउ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज पुट वन ड्रॉप एट अ टाइम. इफ पेशेंट्स पुट मोर देन वन ड्रॉप, इट इज नॉट इफेक्टिव, इट्स नॉट गोइंग टू लोअर द प्रेशर. ऐसा नहीं कि प्रेशर उससे और ज्यादा नीचे आ जाएगा, इट विल गो वेस्ट. महंगी दवाइयाँ होती हैं, मनी कॉस्ट करती हैं, सो वो आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको. नंबर वन. नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट विल कॉज साइड इफेक्ट्स. So please do not put more than one drop. If you have been given two different medications, it is mandatory. It's always a good idea that you should space them apart. Minimum 5 minute का gap रखें. If you can keep a gap of half an hour, that is very, very good. But at least minimum 5 minutes gap between the two drops. After putting the drop, close your eyes for 2 minutes. Punctal occlusion is something which is very important, and every single patient of glaucoma should know how to do it properly. In punctal occlusion, basically you use your index finger and you press at the corner of your eye like this after putting the drops for 2 minutes. And why this is important? Because if you have and you're using these drops, the drops trickle down the nose and they get absorbed in your blood, and that is how the drops produce side effect. So it is very important that as doctors we should always teach our patients that how do they do punctal occlusion and why it is important, and tell them the correct way to uh, do the punctal occlusion. Again, compliance is very important because glaucoma में अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो फ्लक्चुएटिंग प्रेशर्स बहुत ही खराब होते हैं नर्व्स के लिए. तो जैसे शुगर है, आप शुगर की दवाई रोज ले रहे हो, अगर आप शुगर की दवाई नहीं लोगे तो शुगर विल शूट अप एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी. Same way, if you have glaucoma and you are non-compliant, you are not using your drops properly, the pressures will keep going up and down, and this will damage आपकी optic nerves को और ज़्यादा damage करेगा और उसको और खराब कर सकता है. So please remember कि glaucoma की drops आपको हमेशा डालनी है. एक आध एक्स्ट्रा बॉटल रखना इज ऑलवेज अ वाइज डिसीजन कि सडनली बॉटल खत्म हो गई या दवाई नहीं मिली, ट्रैवल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरी मेडिसिन है स्टार्ट करने के लिए. और जब भी आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो आप उसकी पैम्फलेट को जरूर पढ़ें. एज डॉक्टर्स वी ऑलवेज टेल आवर पेशेंट्स दैट प्लीज रीड द पैम्फलेट कि भाई क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या क्या हो सकता है उनसे, सो दैट यू कैन टेल योर डॉक्टर कि भाई ये प्रॉब्लम्स है और मुझे. कई बार आप डायबिटिक होते हो, अस्थमेटिक होते हो, maybe you are feeling depressive, maybe you are feeling sedated during the day, और वो दवाइयों की वजह से हो सकता है. तो प्लीज अपने डॉक्टर्स को आप जरूर शेयर करें एंड रीड द पैम्फलेट. नाउ मेनी टाइम स्पेशली इन एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, जब मैं बता रही थी कि जिसमें ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, वी डू सम लेजर प्रोसीजर्स ऑल्सो विच आर जो अकेले भी कई बार इफेक्टिव होते हैं, बट यूजुअली लेजर के बावजूद भी आपको ड्रॉप्स कंटिन्यू डालनी पड़ती हैं. एंड एज अ लास्ट रिसोर्ट जब हमें लगता है कि भाई दवाइयां भी नहीं काम कर रही हैं, लेजर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज द टाइम वी ट्राई एंड क्रिएट एक हम बाईपास बना देते हैं सर्जरी के थ्रू,
जिससे आपका पानी फिल्टर होता रहता है। एंड सो पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि भाई ग्लॉकोमा की सर्जरी होती है, तो वी कैन टेल कि भाई हाँ ग्लॉकोमा की सर्जरी होती है। एंड अगेन प्लीज एम्फेसाइज टू ऑल योर पेशेंट्स कि भाई कैसे उन्हें ड्रॉप डालनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। And as a doctor, on the occasion of World Glaucoma Awareness Week, my take home message for all glaucoma patients and for everybody would be that if you are diagnosed as glaucoma and you have glaucoma, please do regular visits with your treating doctor. Please put drops regularly. और अगर आप ड्रॉप डालना बीच में कभी भूल जाते हैं या आपको लगता है कि शाम की डोज भूल गए, जब भी याद आए प्लीज पुट द ड्रॉप एंड नेक्स्ट डोज आप सेम टाइम पे अपना डाल लीजिए। एज आई वाज मेंशनिंग दैट प्लीज कीप एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ड्रॉप्स विद यू सो दैट आप फिनिश ऑफ ना कर लें उसको, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी जरूर चेक कराएं। थैंक यू सो मच।